of you, no one has heard. It's early childhood care and education. Okay? It's early childhood care and education. And it is more syllabus. ECCE. Child Development Theory. Because Jean Piaget was key. Homework. I hope so you remember. How we can define? It's a holistic approach where we can see that survival, growth, development and learning, including health, nutrition of a child, cognitive, social, physical and emotional cognitive development. Means for a teacher and child also. हम लोग क्या करते हैं क्लास में जब हम जाते हैं तो what should be our responsibility? क्या होती है हमारी responsibility? Can anyone tell me? Please. हाँ कुछ भी अपने मन से हाथ घुमा रहे हैं तो उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. So it will help them to write. सबसे पहले जब आप लाइन्स सिखाते हैं ना लाइन से पहले उनको 2-4 दिन हफ्ते भर स्क्रिबलिंग दे दीजिए. क्योंकि आई थिंक अगर नर्सरी की बात करें तो बच्चा 4 साल का होता है ऑलरेडी. राइट एलकेजी में भी 5 साल का बच्चा आता है. उनके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं निकलने चाहिए. कुछ ऐसे स्टोरी बताइए. स्टोरी टेलिंग अगर and by dancing कुछ भी by music and learning this playing and dancing. देखिए ये फर्स्ट और सेकंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ये मत सोचिएगा ऑल्दो मैं कहूँगी कि फिफ्थ तक के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिफ्थ तक के बच्चे प्राइमरी सेक्शन में आते हैं. राइट तो सारे बच्चों के लिए हम हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे. डिफरेंटली बट हॉलिस्टिक अप्रोच हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इसको डिफरेंट है. राइट आई होप कि आपको समझ में आए. प्लीज मैम क्या हमें करना है? प्लेइंग फ्लैश कार्ड्स डांस का प्रोफाइल ज़्यादा है. Playing, dancing, writing, dance with expression. Dance with expression. Yeah. Dance. Good. Now, who is the nursery class teacher? Mother teacher? You are. Now, please come. To kiss your mother And one little mouse to kiss your mother. Did you enjoy this time? Round. Left hand, right hand. Left hand, right hand. Left hand, right hand. Left hand, right hand. Rolling back down. Rolling back down. इस बच्चे को ज़्यादा मेहनत करनी है, इसमें नहीं करनी है. कुछ बच्चे इतने एक्टिव होंगे, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे ना, they will do good. बहुत अच्छा करेंगे. तो हमें उनके ऊपर फोकस रखना है, फोकस नहीं हटाना है. बट हमको वर्क किस पे करना है उन बच्चों में जो आगे नहीं आता, जो मिड में है. अब इसकी कुछ एक्टिविटीज है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. जो फाइल था वो मैंने अपने पास से पर्सनली आपके साथ शेयर किया था. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. सर प्लीज है अब तो आप लोग मुझे बता सकते हो एक्टिविटीज कैन टॉक अबाउट हॉलिस्टिक अप्रोच हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड. व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू कैन परफॉर्म हियर एटसेट्रा. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें और ऐड कर सकते हो. आई हैव समराइज दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE. टू डेवलप गुड सोशल एटीट्यूड. बच्चों को ये नहीं पता होता है कि अपने बड़ों से कैसे बात करना है, अपने क्लासमेट से कैसे बात करना है. राइट अपने टीचर से अगर एक साथ कर रहे कॉरिडोर में सपोज एक टाइम हमने किया एक्शन वर्ड सारे बच्चों का एक साथ हो गया म्यूजिक. कोई राइम्स कर लिया आपने. राइट कोई स्टोरीज कर लिया आपने. राइट आई डू मीन्स आई यूज्ड टू डू डिफरेंट थिंग्स ऑन माय असेंबली. So, whatever questions you are not getting, actually, like if you have any doubt or are not able to understand the essence of the question, you can ask.